Okay, so welcome back. Let's talk about the first impedance matching network. So we will try to understand the working principle of each of the matching networks that I have identified, and we will also consider the limitations of given impedance matching circuit. And later on, we will also solve some examples so that if you are given any problem and you are asked to use this particular impedance matching network, how you are going to design that particular matching network. Okay. So the first network is, so what we want to do is we want to find out a circuit that can help us with matching, but we are going to use lumped elements. So matching with lumped elements, and we have given the name to that circuit as LNetwork. So as I previously mentioned that LNetwork, it uses reactive elements. So it uses two reactive elements. And reactive elements means either capacitor or inductor to match on to match an arbitrary load impedance. Now there are two possible configurations. Okay, so there are two possible configurations for this. Which one out of the two so which one out of the two configurations will match or will work? It depends on load impedance. It depends on load impedance. uh, Load impedance value as compared to Z0. And another point is we can design LNetwork for given problem. Either using analytical technique or using
Smith chart technique. Now, our main focus will be on Smith chart technique, okay? But just to make sure that you also understand that uh, analytical method is also available for L networks, I will talk about both of these methods, analytical method as well as Smith chart method. But for stub matching circuits, my main focus will be on Smith chart technique. Okay. So let's go back. So what is the main design component of L networks? Two reactive elements. Okay. So there are two reactive elements that will be used, and then we also mentioned that there are two possible configurations. Okay, so let me draw the circuit diagram of these two possible configurations. So one possible configuration is this is our main transmission line represented by its characteristic impedance, and in between this line, I'm going to connect so let me connect the first lumped element, and I'm going to represent it with JX, and then there is another network, or sorry, not network, another lumped element which is connected in the parallel form, and I'm going to represent it with JB. And then we have load. So this is a circuit that we have. So the circuit inside the red box is L network. Okay, so this is L network. Let me call it L network number one. Okay, again, this is my own notation. This is not a standard one. I just want to give it a name. So this is L network number one. And the other possibility is the other possible configuration is this one. So same transmission line with characteristic impedance Z0. And now the first reactive element is now connected in a parallel configuration represented by JB. And the second reactive element is connected in series, and I'm going to represent it by its reactance. And then we have overload. So this circuit inside this red box is another possible configuration, and we are going to call it L network number two. I've I've shared the attendance link of today's lecture in the chat window, so you people can mark your attendance. Okay, so if you look at the configuration of these two networks, so
As I mentioned before, this box Jx and Jb, they are representation of reactive elements. Okay, and reactive elements are either capacitor or inductor. So uh, this Jx can be capacitor or it can be inductor. Similarly, this Jb can be capacitor or as well as inductor. The difference is when you connect an element in series, so we will represent it. We will represent the series reactive element by its reactance. So this capital X, you people already know from your basic electrical engineering concept that capital X is the symbol that we use for reactance. So this is the reactance of either capacitor or inductor. And this JB is also representation of a reactive element, and that can be capacitor or inductor. And I am representing the capacitor or inductor by its susceptance. So this capital B is the symbol that we usually used for susceptance of the reactive elements. And again, this can be capacitor or inductor. This is the second network, and you can, of course, if you look both of them, you can clearly see the difference that in this L network number two, if you are moving from left to right, so the first reactive element is connected in parallel, and then the second element is connected in series, whereas in L network number one, the first element is connected in series, and the second element is connected in shunt configuration. Okay. Now, if I ask this question, how we will know whether this is capacitor or inductor or this is capacitor or inductor, how you will find out, identify that you need a capacitor over here or inductor over here, कैसे हमें पता चलेगा जी? तो जरा इसको रिपीट करें जी, क्या मतलब प्लस माइनस? माइनस इज अगर फॉर माइनस कैपेसिटर JX हो तो कैपेसिटर है और अगर प्लस JX हो तो इंडक्टर। और इसके बारे में क्या कहेंगे सेम फॉर दिस वन। जी? सेम सर, प्लस माइनस वन सेम। सेम होगा, अगर ये प्लस होगा तो क्या होगा? ये इंडक्टर। नो, सॉरी सर, ये कैपेसिटर होगा। ये कैपेसिटर होगा। यस, यू नो कि सर ससेप्टेंस और रेसिप्रोकल रिएक्टेंस, ठीक है, रेसिप्रोकल है, ठीक यस है। सर। ओके, सो सो जो मैं मेंशन कर रहा था कि ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर यहाँ पे जो वैल्यू हम यूज करेंगे, इफ इट इज सम काइंड ऑफ माइनस जे समथिंग, इट मींस दिस मस्ट बी सम काइंड ऑफ कैपेसिटर, एंड इफ इट इज प्लस जे समथिंग, तो इट मींस कि यहाँ इंडक्टर यूज करना है। सिमिलरली इफ दिस इज प्लस जे बी, इट मींस कि यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज करना है, और अगर यहाँ पे माइनस जे बी होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने इंडक्टर यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर इंडक्टर भी कोई हो सकता है, ये भी कैपेसिटर इंडक्टर हो सकता है। तो ओवरऑल अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 8 पॉसिबिलिटीज। फॉर इसके लिए हो सकती हैं, फॉर इसके लिए हो सकती हैं। किस तरह फॉर इसके लिए हो सकती हैं? मे बी ये भी इंडक्टर हो, ये भी इंडक्टर हो, वन पॉसिबिलिटी। ये कैपेसिटर हो, ये भी कैपेसिटर हो, सेकंड पॉसिबिलिटी। ये कैपेसिटर हो, ये इंडक्टर हो, थर्ड पॉसिबिलिटी। ये इंडक्टर हो, ये कैपेसिटर हो, फोर पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज फॉर दिस सर्किट एज वेल। ओके, नाउ कमिंग टू द, ये तो हमारे पास फिजिकली आपको नजर आ गया है कि अगर आपने किसी भी लोड को मैच कराना हो, ZL को Z0 के साथ मैच कराना हो, तो दरमियान में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ZL मैंने लिया हुआ है, ये ZL Z0 के बराबर नहीं है, ये ZL Z0 के बराबर नहीं। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं? हमने लोड और मेन ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान में ये एक नेटवर्क लगा दिया है जिसको हम L नेटवर्क कह रहे हैं। ठीक हो गया।
अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, एल नेटवर्क नंबर 1 भी है, एल नेटवर्क नंबर 2 भी है, लेकिन फॉर एनी गिवन लोड, अगर आपको एक लोड गिवन है तो वो लोड या तो एल नेटवर्क नंबर 1 से मैच होगा या एल नेटवर्क नंबर 2 से मैच होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि गिवन लोड दोनों नेटवर्क से मैच हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज अ डिजाइनर वी हैव टू फाइंड आउट वेदर एल नेटवर्क नंबर 1 हम यूज करेंगे या एल नेटवर्क नंबर 2 यूज करेंगे। ठीक है, अब ये हम किस बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे? एज अ डिजाइनर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या एल नेटवर्क नंबर 1, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको दोबारा से मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि देर आर टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस नेटवर्क। वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हैं वो अब आपके सामने है। ठीक हो गया, एक को मैंने एल नेटवर्क नंबर 1 का नाम दिया, एक को नंबर 2 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या है, विच वन आउट ऑफ द टू कॉन्फ़िगरेशंस विल वर्क, इट डिपेंड्स ऑन लोड इम्पिडेंस वैल्यू एज कंपेयर टू जेड नॉट। तो इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है कि क्या एल नेटवर्क नंबर 1 यूज करना होगा या एल नेटवर्क नंबर 2 यूज करना होगा। वो हमें देखना होगा कि ये जो जेड एल है इसकी वैल्यू क्या है रिलेटिव टू जेड नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एल रिलेटिव टू जेड नॉट, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। तो मैं ये इसके लिए अब कंडीशन लिखने लगा हूँ। सो कंडीशन क्या है? सो आई विल कॉल इट सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये जो मैं लिखने लगा हूँ, ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कौन सी टेक्निक ये इस पे अप्लाई कर रहे हैं, एनालिटिकल टेक्निक। अगर आप एनालिटिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं तो फिर ये जो पहला काम हमने करना है इसको मैं कह देता हूँ स्टेप नंबर 1। तो एल नेटवर्क डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये फाइंड करना है कि क्या एल नेटवर्क नंबर 1 आपको आप यूज करेंगे या एल नेटवर्क नंबर 2 यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर एनालिटिकल टेक्निक में हमें कैसे मिलेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, we are going to find out if ZL is greater than Z naught. Then select L network number 1। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि विच वन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, ये डिपेंड करेगा कि आपने लोड इम्पिडेंस को कंपेयर करना है जेड नॉट के साथ। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या जेड एल अगर जेड नॉट से ज्यादा हो, द वैल्यू ऑफ जेड एल इज मोर देन जेड नॉट, तो फिर कौन सा नेटवर्क हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, दिस वन। अकॉर्डिंगली अगर तो value of ZL is less than Z naught, then select L network number 2. So this is going to be our selection criteria based on analytical method. इसको फिर हम जब स्मिथ चार्ट टेक्निक में एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि स्मिथ चार्ट के बेस के ऊपर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या एल नेटवर्क नंबर 1 यूज करना है या एल नेटवर्क नंबर 2 यूज करना है। ठीक है, तो इस वक्त मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो कौन सी मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं डिजाइन प्रोसेस की। ओके, तो हम इस वक्त डिजाइन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं।
कि एज अ माइक्रोवेव इंजीनियर अगर आपको एक मैचिंग नेटवर्क डिजाइन करना है और आपने एल नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे। नाउ अज्यूमिंग कि हमने डिसाइड कर लिया है, स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने डिसाइड कर लिया है कि नॉट वी हैव डिसाइडेड बल्कि बेस्ड ऑन जेडएल के बेस के ऊपर हमारे पास आंसर ये आ गया है कि एल नेटवर्क नंबर 1 हमें यूज करना है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो सर्किट डिजाइन करना है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। अब तो सेकंड जो स्टेप है ये सेकंड डिजाइन प्रोसेस प्रोसीजर में जो स्टेप है वो ये है कि ये एक्स और बी की वैल्यू क्या हो ये हमने फाइंड करना। ठीक हो गया। सो व्हाट इज गोइंग टू बी स्टेप नंबर 2, find the value of x and b। तो एल नेटवर्क नंबर 1 में यहाँ पे क्या यूज करना है, कैपेसिटर यूज करना है, इंडक्टर यूज करना है। यहाँ पे कैपेसिटर यूज करना है, इंडक्टर यूज करना है, ये हमने फाइंड करना है। और साथ में ऑफ कोर्स जब हम लेट्स अज्यूम कि अगर यहाँ कैपेसिटर यूज करना है तो कैपेसिटर जब हम प्रैक्टिकल सर्किट में लगाएंगे तो ऑफ कोर्स कैपेसिटर की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो तो उसकी कैपेसिटेंस। तो कितने फेरेड का कितने माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर यहाँ लगाना है। और लेट्स से यहाँ अगर हमने इंडक्टर हमारे पास आ गया तो कितने हेनरी का, कितने माइक्रो हेनरी का, कितने नैनो हेनरी का हमने इंडक्टर यूज करना है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम कैसे फाइंड करेंगे। सो इस केस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ जिस तरह मैंने कहा कि लेट्स अज्यूम कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 के बाद हमारा जो प्रॉब्लम था वो इस तरह था कि ZL की वैल्यू Z0 से ज्यादा थी। इसका मतलब है कि हमने कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया, एल नेटवर्क नंबर 1। अब एल नेटवर्क नंबर 1 के लिए एक्स और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एल नेटवर्क 1 नंबर आपके सामने। ठीक है, एक्स और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। So I will say, suppose we have selected L network number 1। इसको मैं यहाँ नाम भी देता हूँ। तो ये हमने नेटवर्क सेलेक्ट किया और अब हमने इसको फाइंड करना है कि एक्स और बी की वैल्यू क्या है। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि ये जो एल नेटवर्क हमने लगाया हुआ है इसके इनपुट टर्मिनल्स पे इम्पिडेंस कितनी है। हाउ मच इज दिस इम्पिडेंस। तो बेसिकली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि ये जो टर्मिनल्स हैं ये इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में कितनी इम्पिडेंस होगी। So we can make use of simple circuit analysis में आप कोर्सेज पढ़ चुके हैं। ये एक्स है, ये बी है, जेड एल है, तो यहाँ पे कितनी इम्पिडेंस होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू है इसके पहले आपने देखना होगा कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो आप इसका इक्विवेलेंट वो फाइंड कर लेंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा तो इनको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट कि जेड किसके बराबर होगा बेस्ड ऑन दिस सर्किट डायग्राम। सो z will be equal to, इसको मैं लिख रहा हूँ एंड देन यू फाइंड कि इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप मुझे बता देंगे। यहाँ पे जो z होगा उसको मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि ये zl एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो लोड है एक कॉम्प्लेक्स लोड है। इसका रियल पार्ट इसको हम RL कह देते हैं और इसके इमेजनरी पार्ट को हम XL कहते हैं। ठीक, तो मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो इम्पिडेंस है उसको मैं इक्वेशन वाइज इस तरह लिखूंगा।
ओके ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, इज देयर एनी कंफ्यूजन कि ये एक्सप्रेशन किस तरह मैंने डेवलप की है? एनी कंफ्यूजन इन दिस एक्सप्रेशन? No, sir. Okay. So this is the impedance between these 2 points. Now हमारा गोल क्या है? हमने ये एल नेटवर्क इसलिए लगाया है ताकि यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है यहाँ से उसके सामने एक मैच लोड हो। इसका मतलब है कि मैच लोड तभी होगा कि इस सिग्नल को यहाँ पे कितना इम्पीडेंस नजर आना चाहिए ताकि ये मैच हो। How much impedance should be between these two terminals so that our circuit is matched, so that there is no reflection? कितना होना चाहिए? Did not. Z not होना चाहिए. Yes. So I will say for impedance matching, that is reflection coefficient equal to 0, Z has to be equal to Z naught. इसका मतलब है कि जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो Z है इसको Z नॉट के बराबर होना चाहिए। ठीक, सो यहाँ पे हम Z नॉट लिख देंगे और बाकी जो एक्सप्रेशन है इसको आप फिर सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स वी नो कि ये जो Z नॉट है ये एक रियल नंबर है और राइट साइड पे जो आपके पास नंबर है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है कि राइट साइड पे जो टर्म एक्सप्रेशन है इसको आपको स्प्लिट कर सकते हैं, इसका रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा। So if they are equal, so real part must be equal to real part, imaginary part must be equal to imaginary part. So what you need to do is कि आप real part को real part के साथ equate कर देंगे between z naught, और क्योंकि imaginary part तो zero है left side पे, तो यहाँ पे जो भी imaginary part है उसको आप equal to zero ले लेंगे। तो ये जो एक complex equation है, it can be easily represented in terms of two equations. One equation जो आपके पास real part comparison से आएगी और दूसरी जो equation होगी imaginary part से आएगी, ठीक है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ये जो पूरा हम एनालिसिस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि x की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। सो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो अननोन्स हैं वो दो हैं, एक x अननोन है और b अननोन है। तो इसको अकॉर्डिंगली जब दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो टू इक्वेशंस विद टू अननोन्स हमारे पास आ जाएंगे और उन इक्वेशन से हम x भी निकाल देंगे, b भी निकाल देंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट मी राइट अ स्टेटमेंट। दिस complex equation can be separated into two equations, one for real part and one for imaginary part. So we will end up with two equations with two unknowns, that is x and b. We can always solve two equations simultaneously to find two unknowns. So this is a simple mathematical problem कि आपके पास दो equations हैं और दो unknown हैं, तो दो equations से आप easily दो unknown निकाल सकते हैं। So what I'm going to do is I'm going to write those two equations because this is something, it all involves simplification, इसमें manipulation involved है कि आपने left side से
जिस तरह मैंने कहा कि इसका रियल पार्ट, आप इसको एक्सप्रेशन को आप इस तरह लिख लेंगे कि आपके पास रियल पार्ट आ जाए, इमेजिनरी पार्ट आ जाए, रियल को इसकी इक्वल कर देंगे, वो एक इक्वेशन आ जाएगी, इमेजिनरी को दूसरी के जीरो की इक्वल कर लेंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगे। और इन दो इक्वेशंस को अब आपने सॉल्व करना है और आपने बी और एक्स निकालना है। सो दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, नथिंग related to microwave engineering involved. So I will skip this part and I'm going to write, but I will suggest कि इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है, and if you find any problem then let me know. I'm interested कि इसकी equations हम लिख लें so that you people can understand कि ये b और x हम कैसे find करें, ठीक है। So जो हमारे पास b की वैल्यू है वो इस तरह आप निकालेंगे xl माइनस प्लस rl by z नॉट। अगेन दिस इज समथिंग, आपको इस एक्सप्रेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। यू शुड रिमेंबर, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आई है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इक्वेशन, और किस तरीके से आपने ये इक्वेशन डिराइव की है, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। सो बी की इक्वेशन आपके पास ये आ गई, और x जो है आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, 1/b प्लस xl सो ये जो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए। तो हमारे पास अननोन क्या थे कि हमने इस सर्किट को सॉल्व करना था जिसमें हमने x और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो b की वैल्यू हम पहली इक्वेशन जो मैंने लिखी है उसको अगर आप देखें, इक्वेशन a कह देते हैं, इसको इक्वेशन b कहते हैं। इक्वेशन b a को अगर आप देखें, इस इक्वेशन में आपको एक्सएल की जरूरत है। एक्सएल जो है वो ऑफ कोर्स लोड का इमेजिनरी पार्ट है, वो आपको पता है। आरएल क्या है, लोड का रियल पार्ट है, वो आपको पता है। जेड नॉट क्या है, जिस ट्रांसमिशन लाइन को आप मैच करना चाहते हैं वो उसकी वैल्यू। तो ये राइट साइड पे जो आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, आर एल, एक्सएल और जेड नॉट, ऑल ऑफ दीज आर नोन टू अस। ऑल यू नीड टू डू इज इनको आपने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास बी आ जाएगा। बट यू कैन सी कि ये जो एक्सप्रेशन है इट इज काइंड ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ बी। सो देयर आर टू सॉल्यूशंस फॉर बी, and once you know b from equation a, then you go move to equation b. equation b हम किसके लिए यूज करेंगे, x फाइंड करेंगे। x को फाइंड करने के लिए अगेन अगर आप देखें, मुझे xl की जरूरत है, z0 की जरूरत है, rl की जरूरत है जो कि ऑलरेडी मुझे पता है, और साथ में मुझे b की जरूरत है, और b ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके होंगे। तो वो वैल्यूज अगेन बिकॉज यू विल गेट टू वैल्यूज, तो एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो मेन पॉइंट वो ये है कि we will get two solutions. So analytically जब आप L नेटवर्क को डिजाइन करेंगे आपके पास दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है ना। एंड देन इट इज अप टू यू के आप कौन सा सॉल्यूशन प्रेफर करते हैं, और वो आप किस बेस के ऊपर करेंगे। जब दो सॉल्यूशंस आ गए, इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरह डिफाइन कर लेता हूँ कि आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन की जो वैल्यू है उसको B1 कह देते हैं, और B1 को यूज करके आपके पास X1 आ जाएगा, तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। और फिर आपके पास दूसरी वैल्यू B2 आ गई और इसके बाद X2 आ गई। तो ये दो सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स B1 और X1 और B2 X2 ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो कैपेसिटर को या इंडक्टर को, और उसके बारे में ऑलरेडी मैं कमेंट कर चुका हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि कैपेसिटर और इंडक्टर है, वो ऑलरेडी हमें पता है। सो वंस यू फाइंड आउट के सोल्यूशन वन से आपके पास जो कैपेसिटर या इंडक्टर आया है और सोल्यूशन टू से जो कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू है, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर की जो वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज का कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर और इंडक्टर मार्केट में इजीली रेडिली अवेलेबल है। यू पीपल ऑलरेडी नो कि जो कैपेसिटर इंडक्टर्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल रेंजेस। कुछ वेल डिफाइंड रेंजेस हैं, जैसे 22 माइक्रोफेरेड आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आपके पास 45 माइक्रोफेरेड। तो देयर आर सम वेल डिफाइंड वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि जो दो सॉल्यूशंस आए हैं इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो आप इजीली
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, और इसके बेस पे फिर आप कोई भी सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So this was regarding L network number 1, and I will end today's lecture by advising you कि ये जो हमने स्टेप नंबर 2 किया था उसमें मैंने सपोज ये किया था कि हमने L नेटवर्क नंबर 1 अगर सेलेक्ट किया है तो किस तरह सॉल्व करना है. आई विल एडवाइज यू कि आप अज्यूम करें कि आपका जो प्रॉब्लम है उसकी केस में ZL की वैल्यू लेस देन Z0 है. इसका मतलब है कि आपने कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट किया होगा, L नेटवर्क नंबर 2 सेलेक्ट किया होगा, जो कि ये है. नाउ फाइंड आउट कि इस केस में बी और एक्स की क्या इक्वेशन आएगी, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम इज टोटली डिफरेंट. तो बी और एक्स की जो इक्वेशंस आएंगी एनालिटिकल वो डिफरेंट आएंगी, बट इसका मेथड वही होगा. व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने बुक में इसको आप फॉलो कर लेंगे. यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे कितनी एडमिटेंस है. ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त आप देखें कि क्योंकि जो एलिमेंट है शंट में लगा हुआ है, तो मैं इसको एडमिटेंस की फॉर्म में कहूँगा कि यहाँ पे एडमिटेंस कितनी है. और फिर मैचिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि इसकी एडमिटेंस कितनी होनी चाहिए, Z0 के कॉरेस्पॉन्डिंग एडमिटेंस Y0 हो जाएगी. तो मैं कहूँगा कि अगर ये सर्किट मैच सर्किट के तौर पर काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो एडमिटेंस होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, Y0 के बराबर होनी चाहिए. तो जो प्रोसीजर मैंने ये अडॉप्ट किया था इन टर्म्स ऑफ Z किया था, आपने इसको इन टर्म्स ऑफ Y करना होगा. अगेन बुक को आप फॉलो कर लेंगे तो आपके पास L नेटवर्क नंबर 2 के लिए भी इसी तरीके से B और X की एक्सप्रेशंस आ जाएंगी, विच विल नॉट बी सेम, कुछ डिफरेंट होगा. बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस के ये L नेटवर्क नंबर 2 के लिए आप B और X की जो एक्सप्रेशंस जो कि बुक में गिवन है और बुक में कुछ स्टेप्स भी गिवन है उसको आप फॉलो करना. Okay, that's it. Any question before I end today's meeting? Any question? सर ये लैब के बारे में पूछना था कि सर ये होंगी या नहीं सर. आई थिंक ये चेयरमैन साहब से मुझे कल कंफर्म करना पड़ेगा कि वो क्या सजेस्ट करते हैं. तो अगर वो जो भी डिपार्टमेंट लेवल पे पॉलिसी बनाएंगे कि लैब किस तरह कंडक्ट करनी है या नहीं करनी, तो फिर मैं उनसे पूछ के कल आपको गूगल क्लासरूम पे अपडेट कर दूंगा. ठीक. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर.